Do all of you know the BPT? Yes, BPT or not? Or shall I explain? Almost this is the basic proportionality theorem. So please settle down. No talking now. If you need time for talking, I can give you 2 minutes. But when I'm explaining, please concentrate here. Right, बच्चों? चलिए. So basic proportionality theorem, बच्चों. Now, what is basic proportionality theorem? Another name for this theorem is Taylor's theorem. Now, what basic proportionality theorem says, if we have a triangle, right? If we have a triangle, right? And there is a line drawn. So, students, this line is drawn parallel to one side of the triangle. Now, the statement of BPT is a line drawn parallel to one side of a triangle divides the other two sides in the same ratio. What is the meaning of this? If DE is parallel to BP, then AD upon BB is equal to AE upon EC. This thing we have to prove. Now what is given? This thing is given. ये given हो गया students, and this thing we have to prove. How to do this? How to do this, students? See, we have this triangle. Right? Now we'll do some construction. What construction we'll do? Draw a perpendicular from D to AE. This is perpendicular. Draw a perpendicular from E to AD. Let this is it clear? This is clear. So what will be the construction? Draw BC perpendicular to AE and EF perpendicular to. Is this clear, students? तो हमने दोनों ही perpendicular ड्रॉप कर दिए D और E से on AD and AE respectively. Now, proof. Now, what will be the area of triangle ADE with base AD? Area of triangle ADE with base AD. समझ आएगा बच्चों? What is the formula for area of triangle? Half into base into height. Now this will be your base. ये आपका base हो जाएगा बच्चों. ये base हो जाएगा. Right? AD is base. And what will be the height? FE. Right? So area will be half into base into. Is this step clear? This is equation 1. Is this step clear, बच्चों? Area of triangle ADE with base AD, where FE is the perpendicular, that is height. Similarly, area of triangle ADE with base. Now we take base as AE. What will be the area? Again, half into base into height. What will be the height in this case? What is the height, students?
अगर आप ट्रायंगल ADE में बेस AE को ले रहे हैं, व्हाट विल बी द हाइट? DG? Yes or no? Now this is equation 2. Now meet BE and CD. Now if you see, if I take this triangle, right? What is the name of the triangle? Triangle BDE, right? If its base is BD, so this base, what will be its height? क्या हो जाएगी बच्चों? What will be the height of the triangle BDE if this is BD? Tell me बच्चों. बेटा height FE हो जाएगी. This will be the height. I'll explain it. Suppose we have this triangle. What will be height? ये हो जाएगी बच्चों height. Now it is outside the triangle. Height is outside the triangle or not? Now Yes. go back to this figure. If the triangle BDE, its height will be FE. Is it clear? Is it clear or not? Yes. Now what will be the area of triangle BDE? Half into base. What is base? BD. What is height? What is height? EF. Yeah, FE. Very good. Now area of triangle BDE equal to half into base into height. This equation is correct. Now similarly, what will be the area? Now see this triangle. Can you see this triangle? Can you see this triangle? येलो वाला शेड किया स्टूडेंट जो मैंने ट्रायंगल इसमें आपको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे. लेट मी डू दिस विद अ different color. Now can you see this triangle? Its base is C. Now what will be the area of the triangle BEC? What will be the area of this triangle? Now height of this triangle will be BG, right? Is this clear, bachcho? This will be the height and base is EC. So area of triangle EC will be equal to half into base into height is BG. Any doubt, bachcho, in this? If you have any doubt, please let me know. Right? So now what we'll do, we'll divide 1 by 3 and 2 by 4. Now what we'll do, divide 1 by 3 and 2 by 4. Is this clear, students? So what this becomes? Area of triangle ADE divided by area of triangle EDE. What it becomes? Half into base. Base इसमें AD था बच्चों. हाइट क्या हो जाएगी इसकी? हाइट क्या हो जाएगी इसकी? AD into EF. Right? ये दो पेज बीच में रह गए, कोई बात नहीं. AD into it was EF and it was half into BB into ये आ रहा था बच्चों, half into BD into EF, right? Similarly
This will be half into AE into DG. half cancel हो गया EF से EF. So what this got? Let this is equation 5. When you divide 2 by 4, what you got? Area of triangle ADE divided by area of triangle. Now the name of that will be DE, right? And that will become half into AE into DG over half into EC into D. ठीक है बच्चों, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, डीजी से डीजे, वी गॉट AE बाय डाउट, एनी डाउट स्टूडेंट्स? नाउ हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. अगर हम इसकी लेफ्ट साइड्स को इनको इक्वल कर दें तो विल गेट द आंसर. अब देखिए न्यूमरेटर जो है वो सेम है बच्चों, बट डिनोमिनेटर में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BBE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC. Now if you see this figure, we have two triangles DEB and DEC. Now we have to make these two triangles equal in area. बच्चों, there is theorem. This theorem is there in the class, is used to be there in the class 9. But आप लोगों के पास वो chapter delete हो गया, तो that's why you have not studied that. What is that theorem बच्चों? एक theorem होती है बच्चों, area of the triangle between the same parallels and on the same base, right? Let's say this is triangle ABC. There is another triangle BEC, right? Now these two lines are parallel. These two triangles are equal in area. Why? Because they lie on the same base and between the same parallel. When they are in the between the same parallels, they will have the same height. Yes or no, bache? What will be height of this triangle? This will be height. And what is the height of this triangle? Let's say this is the height. So both these lines, this one and this one will be equal, right? Base is equal, so their areas are equal, right? What is the theorem? You can write down area of the triangles on the same base, lying on the same base and between the same parallel. Same parallel are equal. Please note down this theorem, students. This is a very important theorem. The result of this theorem will use to prove the BPT. हो गया बच्चों, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना so that you can understand this. चले आगे जी, कर लो कर लो कर लो. अब देखिए बेटा,
अब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाएगा बिकॉज डी इज पैरेलल टू बीसी, राइट, और इनका बेस सेम है बेटा डी, सो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल डीईबी एंड डीईसी विल बी इक्वल, राइट. So what we can do now, what we can conclude that triangle DEB and triangle DEC lie on the same base, lie on same base B, same base B and between same parallel, between same parallel. Therefore, area of triangle DEB is equal to area of triangle DEC. Right, बच्चों? You can write this statement. So therefore, our equation 6 will become, equation 6 becomes area of triangle ADE divided by area of triangle DEC equal to AE upon EC. Right? Is this clear? So this theorem DEC के place पे बच्चों हमने क्या कर दिया? DEB लगा दिया. So now this part and this part are become equal. So therefore we can conclude AD upon DB is equal to AE upon EC. Right? So therefore from 5 and 7 आ जाएगा बच्चों AD upon DB AE upon EC. Right? So this will be the proof of the BPT. If you want to note down, please note down the entire theorem. Right? If you have any doubt, please ask. Right? This is one of the most important. Means you will find hardly any math paper, whether it is board paper or pre-board paper from any school. You will definitely find this theorem for the proof. So this theorem should be on your tips. How to do this. Right, bachcho? So you can note down this. If you want to note down, you can note down this. If you want to move, you can move also. चलिए आगे बच्चों हम नेक्स्ट आता है बच्चों प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी. BPT converse, that means right. Now what is converse of BPT? Talking bachcho, no talking. Now in BPT it was given that D is parallel to BC. Then prove that AD upon DB is equal to AE upon EC. Now it is moving around. No talking bachche, no talking. I can see some of you. Please stop talking. Now what is given here? What is given? AD upon DB is going. Now this thing is given. What you have to prove? D is parallel to BC. Earlier this thing was given. You have to prove the ratio of the other two sides. Now the ratio of other two sides is equal. Right? We have to prove it is parallel. How to do this? Right? हम इसको कैसे करते हैं बच्चे? We'll do it by the contradiction.
Now what is contradiction? What is the word meaning of contradiction बच्चे? Suppose मैं कुछ चीज बोल रहा हूँ और थोड़ी देर बाद कहूँ मैं नहीं 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 ये नहीं हो सकती. That is called contradiction. मतलब जो अपनी बात कहते हैं आप उसी को बाद में wrong prove कर देते हैं. That is contradiction. So we'll prove it by the contradiction. How will we prove it? Let us assume not parallel to BC and let DF is parallel to BC. हमने लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों DF. This is the line DF. DF is parallel to BC. हमने assume कर लिया कि DE जो है वो parallel नहीं है. In place of that, DF is parallel. Right? Now, if DF is parallel, if DF is parallel to BC, then upon DP will be equal to, yes or no बच्चों? From where we got this result? ये रिजल्ट कहाँ से आया बच्चों? If यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? By BPT, right? So let's say this is one. Also, on DB is equal to AE upon, ये क्या है? This is given. Now from 1 to, ये दोनों चीजें सेम है बच्चों. So what you can conclude from 1 and 2, AF upon FC is equal to AE upon EC. Is this clear? Yes or no? Yes, sir. अच्छा, अगर वो दोनों की रेशो सेम है, मीन्स यहां से क्या हो जाएगा? तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? Therefore, F and E coincide. तो बच्चे F और E अलग अलग तो नहीं हो सकते ना. अगर ये भी पैरेलल है तो ये भी पैरेलल आ रहा है, राइट? सो अलग अलग तो नहीं हो सकते ना अगर दोनों की रेशो सेम आ रही है. बच्चे AD अपॉन DB AE अपॉन EC के भी इक्वल है और AF अपॉन FC के भी इक्वल है. They can only be proved if this point and this point coincide. मतलब दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, राइट? Right? So F and E coincide and our assumption is wrong. DE is parallel to BC. Right? तो अब यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? E and F coincide and therefore DE is parallel to BC. क्योंकि DF जो है वो पैरेलल है बच्चे, F और E सेम पॉइंट है, तो therefore DE is also parallel to BC. Is it clear or not? Is it clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Now we'll be doing some questions on triangles, right? On the basis of BPT theorem. Talking, bachcho, no talking. Any doubt? Please ask the questions. Now we have trapezium. We have been given a trapezium AB. ABCD is given and such that AB is parallel to E and F are points on the non-parallel side AB and BC respectively. Right? Now what is given? AC is parallel to BC and
parallel to AB, so that we have to prove it, right? तो दो चीजें गिवन है बच्चों, AB is parallel to DC and EF is parallel to AB. अच्छा, now this is parallel to this, this is parallel to this, तो ये आपस में भी parallel हो गए बच्चों. As EF is parallel to AB, therefore EF is also parallel to DC, right बच्चों? और सबसे पहले हमने क्या करना है, मीट AC, AC को मीट करा दो and let's say this point is G. Let's say this point is G. Now what we'll do, we'll apply the BPT first in triangle ADC and then in triangle ABC. ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों? In triangle ADE as EG parallel to DC, therefore AE upon ED is equal to, is this step clear जी? Is this step clear? आप इसकी रीजनिंग क्या दोगे? बाय बीपीटी. अगर EG और DC पैरेलल है, इनकी साइड्स की रेशियो सेम हो जाएगी बेटा. एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? नाउ सिमिलरली देखिए, दिस AB is parallel to EFG, AB is parallel to GF, therefore AG upon GC will be equal to BF upon FC. As AB is parallel to GF, therefore AG upon GC is equal to so let's say this is equation 2, right? Now observe carefully 1 and 2. What is 1? AE upon ED equal to AG upon GC. What is 2? AG upon GC equal to BF upon FC. तो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है बच्चों. तो हम क्या लिखेंगे, therefore from 1 and 2, 1 and 2 क्या हो जाएगा बेटा? क्या आ जाएगा? Any doubt in this बच्चों? Next one. Upon this, AE upon ED equal to AG upon GC. AG upon GC is equal to BF upon FC. So therefore, this upon this will be equal to BF upon FC. Understood, bachon? Yes. Right? Any doubt? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नोट करना है बेटा ये वाला क्वेश्चन? कर लो बेटा. No talking, please. हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गया ये वाला पार्ट, आगे चले.
स्लाइड पर चले। Okay. हाँ जी बच्चों, नोट कीजिए फटाफट। Have you noted down? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। डू यू हैव द असाइनमेंट? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। Now we have been given a figure and triangle. Triangle is given. No talking बच्चों. This figure is given. In this figure, yes on and two. P upon TR. Is not talking. Is now just look at the question. It is given that PS upon SQ equal to PT upon TR. Right? Now, listen the question. When this one talking. अच्छा, जब आपको ये चीज गिवन है तो which theorem you will apply? Right? When this thing is given, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे. This is also given. ESP. This angle is given equal to this angle. This is no talking. This angle is also given equal. You have to prove that triangle PQR is an isosceles triangle. How to do this? कौन explain? Okay. Please anyone. चलिए मैं पूछ लेता हूँ कुछ बच्चों से. बेटा सबसे लास्ट बेंच पे दो गर्ल्स बैठी हैं. लेफ्ट वाले प्लीज स्टैंड अप. लेफ्ट गर्ल. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो इधर उधर देख रहे हैं ना, हाफ स्लीव स्वेटर डाला हुआ है. Yes, बच्चों प्लीज एक्सप्लेन दिस. लेफ्ट वाली स्टूडेंट आ जाइए प्लीज, माइक के पास आ जाइए और इसको एक्सप्लेन कीजिए जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. आइए क्या क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप, प्लीज एक्सप्लेन इट. हाँ जी कीजिए जरा. डू दिस क्वेश्चन बेटा, आपको आता है या नहीं आता? यस और नो? हाँ जी बताइए फिर अगर ट्राई करना है.
तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ये देखिए एस पी एस अपॉन एफ क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। देयरफॉर एफ सी इज पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ पे क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, राइट? Now, if ST is parallel to R, हम क्या लिखेंगे बेटा? If ST is parallel to QR, therefore angle PST will be equal to angle PQR. Yes or no, बच्चे? This angle will be equal to this angle. Why? Corresponding angle. Very good, बच्चों. ठीक है? So, angle PST is given equal to PRQ. Right? Angle PST is given equal to PRQ. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? Therefore, angle PQR is equal to PRQ. ये दोनों इक्वल हो गए बच्चों? If these two angles are equal, angle Q equal to angle R, therefore the side opposite to angle Q and angle R will be equal. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? Therefore, PR will be equal to PQ. Therefore, triangle PQR is isosceles triangle. समझ में आया बच्चों? स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है? First, we have to prove these are the parallel lines. When they are parallel, this angle will be equal to this corresponding angle. If this angle and this angle equal, this also equal to this. So therefore, these two angles will be equal. If these two are equal, then angle side opposite to them will be equal. Hence, the triangle PQR will be isosceles. Please note down this. You still have doubt? Please ask the question. राइट बच्चों? तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है. पहले आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज किया, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया. आफ्टर दैट यू हैव अप्लाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, राइट? So 3 concepts you have used in this question. Please note down it. I now done the इस ऑप्शन कर दीजिए. करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. आप लोग the diagonal of a quadrilateral. I am writing third question. The diagonal quadrilateral each other so that ABCD is a trapezium. Now, this is the question. The diagonals of the quadrilateral ABCD intersect each other at the point O, such that AO upon BO
is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. Now students, read the question carefully and tell me, to prove trapezium, what we should do. What is the property of a trapezium? क्या property होती है trapezium की बच्चे? One pair of opposite side is so we have to prove one side of the trapezium is parallel. Let's say quadrilateral, right? बोली क्यों जान रहे हो? बच्चे देखिए, कॉपियां कितने छोटी हैं? this is a quadrilateral and this point is O. Now what is given to us? AO upon BO is equal to CO upon DO. What we have to prove? What is given? AO upon BO is equal to CO upon DO. What is to prove? क्या प्रूव करना है बच्चों हमें? प्रूव कर देंगे तो हमारा ट्रेपेजियम बन जाएगा बच्चों, राइट? सो AB is parallel to DC. Now how to do this? ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों, देखिए जरा. As AO upon BO equal to CO upon DO, right? But we can write from here AO upon CO is equal to BO upon DO. करना हाँ जी, इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं बच्चों हमें. AO upon CO equal to BO upon DO. Let's say this is first. Now कंस्ट्रक्शन करनी है थोड़ी सी. कंस्ट्रक्शन क्या करनी है बच्चों? What we have to construct? Draw a line parallel to draw EF parallel to DC and passing through O. ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शन में draw EF parallel to DC and passing through O. ठीक है, ये लगा दिए. नाउ जब बच्चों ये पैरेलल हो गई इसकी, राइट? सो कैन वी अप्लाई द BPT here? Now by applying BPT, what will get? AE upon ED is equal to AO upon CO. In triangle ADC, now what we'll do? In triangle ADC में क्या हो जाएगा बच्चों? AE upon ED is equal to AO upon OC. In triangle ADC, यहाँ पे लिखेंगे as CO is parallel to DC, as CO is parallel to DC, therefore AE upon ED will be equal to. नहीं आना. यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? अगर ये दोनों पैरेलल है तो AE upon ED will be equal to AO upon OC by BPT. Yes or no? Yes. Yes. Now Yes. यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 1 and 2. अगर आप 1 and 2 को ऑब्जर्व करो, AO upon CO equal to BO upon DO, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम? फ्रॉम 1 and 2 ये वाला पार्ट सेम है, तो these two will be equal.
AE upon ED equal to BE upon DO. For 1 and 2, BO upon DO will be equal to, यहाँ तक कोई डाउट बचा? यहाँ तक कोई डाउट? अब आ जाओ आपके डायग्राम पे। अब इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए बच्चे। इफ AO upon DO is equal to AE upon ED, तो हम इस ट्रायंगल ABD में कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा सकते हैं बच्चे। ये देखिए इन साइड्स की रेशो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाते हैं, दिस EO विल बी पैरेलल टू AB। यस और नो? देखिए बच्चे, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं कलर चेंज करके कर रहा हूँ। AE अपॉन ED is equal to B upon DO. Then the triangle ABD, applying the converse of BPT, this EO will be parallel to AB. क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD if BO upon, यहाँ पे लिख दो बच्चों, BO upon DO is equal to AE upon ED, then EO will be parallel to AB। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ BPT, right जी? Is this clear? So therefore, as EO is parallel to DC and EO is parallel to AB, therefore AB and ABCD is a trapezium। दोनों पैरेलल आ गए और therefore ABCD is a trapezium। Very very important question बच्चों, you must understand this question carefully। बेटा ये गर्ल स्टूडेंट, अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछने के लिए बुलाया था, you could not explain, और अब आप गप्पे मार रहे हो बैठ के। बच्चों वंस अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे किया। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन की, वी हैव ड्रॉन दिस लाइन पैरेलल टू BC and this are parallel, applying the BPT in triangle ADC, AE upon ED equal to AO upon OC, right? Now it was given to us AO upon OC equal to BO upon OD, तो वहां से हमने क्या कर दिया? AE upon ED will be equal to BO upon OD। तो इन दोनों को इक्वल, जब इन दोनों को इक्वल किया तो ट्रायंगल ABD में हमने कन्वर्स ऑफ BPT लगाया है। जब कन्वर्स ऑफ BPT लगाया तो EO becomes parallel to AB। Is this clear? Is it clear बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक है? Any doubt? इस क्वेश्चन को everybody please note down, very very important question and quite confusing also। ध्यान से नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग भी है। हाँ जी बेटा, आप दोनों लोग खड़े हो जाइए जरा, सेंटर में जो दो बॉयज बैठे हैं ना बेटा, एक सरदार जी और उनके साथ वाला स्टूडेंट, प्लीज स्टैंड अप, बोथ ऑफ यू प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप बच्चे, बोथ ऑफ यू। सेकंड लाइन जो नजर आ रही है, प्लीज स्टैंड अप।
क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे आप लोगों को? व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाई यू आर टॉकिंग? पीछे जाके खड़े हो जाइए, वो डायस पड़ा हुआ है ना जहाँ पे, प्लीज गो देयर। हाँ जी, इसको देखिए, करिए नोट इसको जरा। ये वाला पेज हो गया बच्चे, आगे चले। Jasmine and Manchika. फटाफट कीजिए जरा इस पार्ट को। जरा इसका नोट। चलो चले आगे। देखिए बच्चों, students, please look at this question. Now in this figure, D is given parallel to OQ. See, this D is parallel to OQ. And DF parallel to OR. So that PF is parallel to, ये शो करना है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? आपको दो लाइंस पैरेलल गिवन है, दो पेयर्स ऑफ लाइंस, you have to prove third pair of lines, right? What is given to you parallel? This line parallel to this line. Now the triangle PQO and apply the converse of apply the BPT in this. बच्चे, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं,
apply the BPT, right? So कैसे करेंगे बच्चे इसमें हम proof? In triangle PQO, in triangle PQO, if E parallel to OQ, अगर ये दोनों पैरेलल है तो व्हाट विल हैपन? P upon EQ will be equal to PD upon DO. Upon EQ will be equal to P upon. Is this step clear, बच्चों? Is this step clear? Yes. बेटा ये देखिए दोनों पैरेलल लाइंस थी तो हमने क्या किया, यहां से बीपीटी लगा दी बाय बीपीटी, बीपीटी लगा दी तो क्या आ गया बेटा? P अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DQ. Similarly, triangle POR. Similarly, in triangle POR, DF is parallel to OR. Therefore, PD upon DO will be equal to PF upon FR. So, similarly, in POR, so as F is parallel to OR, F is parallel to OR, therefore PD upon DO will be equal to PF upon FR. ये हो जाएगा बच्चों. Now observe equation 1 and 2. What is equation 1 and 2? P upon EQ equal to PD upon DO. PD upon DO कॉमन है बच्चों, देखिए ये वाला पार्ट कॉमन है दोनों में, right? So what we can write from 1 and 2. 1 and 2 से क्या हो जाएगा? P upon EQ will be equal to E upon EQ equal to, यहाँ तो कोई डाउट बच्चों? Anything not clear till now? अब इसको ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से जरा. If PE upon PQ is equal to PF upon FR. So now what we can apply here? What we can apply here? Converse of BPT beta. PE upon EQ equal to PF upon FR. Therefore, PF will be parallel to PF. Okay. यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? As in triangle PQR. As PE upon EQ is equal to PF upon FR. Therefore, EF will be parallel to QR. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? By Converse of BPT. ठीक है बच्चों, और यही प्रूव करना था हमें. Hence proved. देखिए प्रूव करना था जी. देखिए बच्चे, जब भी आप कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन करें ना, ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली, राइट? What is given to you, what you have to prove. Just see which concept you can apply. So here we have applied BPT 2 times and converse of BPT once. So इन तीनों चीजों को कंबाइन करके we have reached to our result part. Is this clear? आप लोग आ जाओ बेटा, बैठ जाइए आगे. Both of you please come forward. Any doubt बच्चों in this question? Any doubt students? Is this clear? Is it clear? If yes, please raise your hands. If no, please raise your hand.
बच्चे यस में है, नो में है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. ओके, थैंक यू। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। मैं और पढ़ाना ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी। E and D are perpendicular drawn from C to AB and from B to AC, right? We have to prove that AE into BD is equal to AD into C. This we have to prove, bachcho. This we have to prove. AE, what is AE? This into BD is equal to AD into C. How to prove this, bachcho? How to prove this? These two are perpendiculars. अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारे पास सिमिलैरिटी का आ गया है। सिमिलैरिटी आप लोगों ने की है जी? हैव यू डन सिमिलैरिटी और नॉट? Yes. कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन देन? सिमिलैरिटी के आपको रूल्स पता है बेटा? कौन कौन से सिमिलर होते हैं सिमिलैरिटी के? Angle. एक बच्चा खड़ा होकर बताए। Anyone please stand up and explain me what are the similarity rules? Anyone, अपने आप बता दो, नहीं मैं फिर किसी को खड़ा करके पूछ लूं। Anyone of you please come. अरे सारे टॉपर्स की क्लास है ये आप लोगों की, फिर भी आप लोग बच्चे जो है कंट्रीब्यूट नहीं करते हो, ठीक है? हाँ जी, आप ही खड़े हो जाइए, स्क्रीन में सबसे पहले नजर आ रहे हैं ना बॉय जो हाथ रख के बैठे हुए हैं अपनी शिन पे। प्लीज स्टैंड अप। हाँ, आपको ही बोल रहा हूँ मैं। रेस्पेक्ट फॉर गॉड। बताइए जरा, कौन कौन से सिमिलैरिटी रूल्स होते हैं? Angle. एंगल एंगल, SAS. एस से एस, Angle. एंगल एंगल, Triple. एंगल एंगल और एंगल में क्या फर्क होता है? और Side. हाँ जी, एक मिनट, नो लाफिंग। ये जो एस से एस होता है इसका मीनिंग क्या होता है? Side angle. Side. साइड एंगल, साइड का मीनिंग क्या हुआ बच्चे? ये सपोज मेरे पास दो एंगल्स है बच्चे, एक से तीन। इसमें पता कौन सा एंगल उसमें आएगा? बताइए दो साइड और एसी दी है। साइड का क्या मीनिंग होता है? साइड शुड बी इक्वल, साइड शुड बी इक्वल, प्रोपोर्शनल। दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। कि देखिए, प्लीज सिट डाउन बेटा, जब हम सिमिलैरिटी लेते हैं तो साइड्स आर नॉट इक्वल, दे आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर वो इक्वल है तो क्या बन जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी? हु विल टेल? Explaining you when we are talking about SAS. So SAS means corresponding side should be proportional. अगर वो इक्वल हो जाती है तो then it is called
टेल मी, ऑन करो माइक और बताइए जरा. Tell me what is the difference between congruency and similarity. What is the difference? हाँ जी बोलिए बोलिए. Side equal media. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ General term. What is the meaning of? Now look at these two triangles. These two circles. Sorry. These circles are similar or congruent? बताओ. Similar. What is the difference then? Similar and congruence. बताए खड़ा हो कोई भी आ जाए. Anyone? बोलो. Just tell me, students, what is the difference? बता दो. बेटा देखिए क्या है. They are looking alike. वो दोनों सेम दिख रहे हैं, राइट? Yes. ठीक है. उनकी जो डायमेंशन है बच्चों, वो जरूरी नहीं है कि सेम हो. इन दिस केस its radius is, let's say, capital R. These two R's are not equal, but they are look alike. Is this clear? So they are similar. For example, have you seen? Some of you must have seen the Taj Mahal, right? ठीक है. तो एक्चुअल का ताजमहल होता है और जो लोगों के घर पे मॉडल्स पड़े होते हैं, ऑफिस में मॉडल पड़े होते हैं, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? दे लुक्स अलाइक, सेम दिखने में सेम है बच्चे, बट उनकी डायमेंशंस डिफरेंट है. सो दे आर सिमिलर. व्हेन आई से कॉन्ग्रुएंट, फॉर एग्जांपल यू हैव दीज टू हैंड्स. इफ यू पुट वन हैंड ओवर अदर, सारे लोग अपने हाथ एक दूसरे के ऊपर रखिए जरा इस तरह से. प्लीज डू इट. एक के ऊपर एक ऐसे. तो ये एक दूसरे के ऊपर पूरा फिक्स आ रहे हैं बच्चों. कैन यू सी दिस? These are congruent. When you can overlap one over other, these are congruent. So difference between similar and congruence is, similar means they are looking alike, same है, but वो एक दूसरे के ऊपर overlap नहीं कर रहे. But when you say congruent, they should overlap over one another. Is it clear? Is it clear? बोलिए. Is it clear? Yes, sir. Now the concept similarity and the question related to that will be doing in the next class. Is this clear, students? Okay, sir. Okay, students. Thank you very much. Thanks a lot, ma'am. Thank you, sir. sir.